होगा ये ट्रक वाला क्वेश्चन। बाकी तो कोई ट्रक कुछ था ही नहीं क्वेश्चन पेपर के अंदर। वही एक ही एग्जाम्पलर्स बनता है 49। एग्जाम्पलर से आया था। और एक सूडो फोर्स का क्वेश्चन आया ये जो, तो उसको पहले ही पता था क्योंकि उसको एक्सपोजर है, मतलब वो एक्सपोजर लेना चाहता है। एक्सपोजर तो मैं भी दे सकता हूँ, मुझे जो है मौका नहीं मिल रहा एक्सपोजर देने का। कहते हैं एक्सपोजर देने की भी कोशिश करो तो कुछ होता नहीं है। यू कैन ऑल्सो इजिली स्कोर, इतने सिंपल पेपर आ रहे हैं तुम्हें, टू सिंपल। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है यार, कुछ मतलब डायग्राम नहीं नहीं बनाया है। नहीं, डायग्राम की कटे, मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी है, मैंने पूरी, उसके पूरे सही है। वर्क पावर, उसका पेपर कॉपी करके देखो क्या लिखा है उसने। और डिसिप्लिन्ड होते हैं और कोई फर्क नहीं है, कहीं भी पढ़ लो। जहाँ डिसिप्लिन बच्चा है इजी हो जाता है थोड़ा। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट, सॉरी, द वर्क डन की बात कर रहे थे हम कल। ओके, सो वी कवर्ड ओनली वन एस्पेक्ट, राइट? सो वर्क डन ऑन अ सिस्टम पॉजिटिव बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कल हमने जो उसका एस्पेक्ट देखा था दैट वाज मोर अबाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड टुडे व्हाट वी सी इज द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो अगर आप मैकेनिकल एनर्जी की बात करो तो ऑब्वियसली यू हैव, बिफोर आई डू दैट आई विल टेल यू व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे अबाउट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो जब वर्क डन करती हैं किसी बॉडी के ऊपर in a closed path. Remember, the word is in a closed path. When these forces act on our body and do some work in a closed path, तो मतलब यहाँ से शुरू हुए, work done हुआ, okay, and then maybe you went on an incline and you came back from the incline. Then what happens is the overall work done is zero, because you reclaim whatever you spend as the energy. तो closed path के अंदर conservative forces जो है, the work done by them is zero. Now I have drawn a circle, but don't worry, I can draw, you can take any path and come back, doesn't matter. So अगर force body के ऊपर इस, मान लो ये body थी जिसने ये path लिया, and it comes back to the same part. If a conservative, why friction अगर लग रहा होता और वर्क डन करते तो you would have lost all the energy in overcoming the friction. यहाँ पे लॉस नहीं होता कोई भी, ठीक है? So whenever you have a situation where the network is zero in a closed path, you are dealing with conservative forces. Example of a non-conservative force is friction. If you go above and you do some work on the body to take it up, supposingly it gets, it acquires a height only, so it gains potential energy. You will lose all the work you did in overcoming friction, and when you come down again you will lose all the work. So work done is not zero in case of frictional forces, because the nature of frictional forces, you will make losses. It's a non-conservative force, it doesn't conserve your work. Okay, so the good examples of conservative force: weight, only weight. If a body goes up and the body comes down, body goes up, body comes down, then the total work is zero in a closed path. आप ऊपर गए, वापस आए, बोला तो what is the total work done by you? My question was, I have done some work, but tell me what is the nature of the force? He said it's a gravitational force. If it is a gravitational force, it's a conservative force. No work is done. ओके, ठीक है, ये फ्रिक्शन है यहाँ पे, ठीक या है। इस केस में फ्रिक्शन था तो ओके। सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट, अभी दिख जाएगा व्हेन यू डू द न्यूमेरिकल्स हाउ टू अप्लाई दिस, कि क्लोज्ड पाथ है या नहीं है, या टाइप ऑफ फोर्स कौन सी है। बट डेफिनेशन वाइज
work is zero when you have a closed path associated with a conservative force. So what is potential energy? Any idea? The energy due to configuration of the system. Configuration of the system decides the energy of the system. Okay, which means if you have a conservative force, okay, so you still have a conservative force involvement, and you do some work using this force, all the work which you do will get split between the components of the system. How? If a particle is at a point here and it reaches another point, then the change in its potential energy, because you have reconfigured the system. Earlier it was at some point, now it has reached here, right? So some amount, so whatever work you did will get converted into force into distance. So this will appear as the change in the energy of the system because of change in position of the body. So this is in physics terminology, change in position is being called as, it's basically change in position, which means you're reconfiguring. इस चीज को उठा के यहाँ लिख दो, रख दो, ऐसे कर दो. Okay, so this will give you your answer for potential energy. Okay, and the one which you are concerned about is mainly the gravitational potential energy, which I wrote yesterday as gravitational potential energy, which is equal to mgh. This is what we studied, and this is also actually a configurational change. ब्लॉक यहाँ पे था, ब्लॉक की पोजीशन यहाँ पे कर दी, okay, ऊपर. So whatever change has happened is basically the position in y-axis is height, and that change is potential in nature and is given by mgh. Okay, the gain in height. तो ये भी position change ही है, लेकिन vertical direction में होती है gravitational में. Okay, so इसमें reference point इसको मान लो अर्थ को. This is your reference point from where you're going to measure the change in the potential energy. यहाँ पे zero होती है generally. अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो, और mgh के फॉर्मूले से निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट h. So change in potential energy basically is at a height it is mgh, on the ground it is zero. So the net change is mgh at a height h minus zero, delta u is equal to mgh. ठीक है जी. और जो आपको एक और जिससे आपको बहुत बार you will come across this many times is the type which is called as elastic potential energy. Elastic potential energy, okay, which is associated with springs. Spring is lying horizontally. You pull the string, you do some work, the spring will acquire energy which is called as the spring energy. Okay. हाफ के अगर आप इसे x से खींच देते हो, if you pull it by an amount x, ऐसे खींच के आपने रोक दिया उसको, it will get a spring energy of half kx square. If you leave it, then it acquires a kinetic energy. So this keeps on getting converted into half mv square. But if you want to find out कि इसकी configuration बदली, मैंने spring को खींच दिया इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले आए और स्प्रिंग को लंबा कर दिया बाय एन अमाउंट x, देन द टोटल potential energy that gets stored because of your work which you did is this. इधर भी आप जब बॉल को ऊपर ले जाते हो, whatever work you do gets stored in the ball in the form of the gravitational potential energy mgh. तो कल हम पढ़ रहे थे कि जब भी हम वर्क डन करते हैं इट रिजल्ट्स इन चेंज इन वेलोसिटी, ओके, एंड हाफ mv स्क्वायर पे बहुत हमारा फोकस था. अब जो मूविंग फॉरवर्ड है, आवर फोकस विल बिकम potential energy also. So we will have to see whatever conservative force is acting, is it only changing velocity or is it also changing the position. हो सकता है कि वो बॉल जो है अब
ऊपर की तरफ अगर जा रही है, if it is going, upwards, it may be accelerating as well as gaining height. So we will say कि भाई इसकी जो total work done करा है, that actually has got utilized in helping it gain a positional change. और ग्राउंड पे तो जीरो थी एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड ऑल्सो इट हैज गेन्ड सम वेलोसिटी इफ इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स. मान लो ये टोटल नीचे 20 न्यूटन था और यहाँ पे 100 न्यूटन था, सो इट इज एक्सेलरेटिंग विद द हेल्प ऑफ 80 न्यूटन्स. तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द लेंथ हियर, एंड वी कैन फाइंड कि यहाँ पहुँचते पहुँचते कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली. ऑब्वियसली यहाँ से गिरेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह जाएगा. okay, हमें एंगल मालूम है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल भी पता चल जाएगा, but that is not the question. So work done, whatever you do has to be seen from two perspectives. Basically the total work done is now getting transferred to the body. The work done is getting transferred to the body in the form of gravitational potential energy, and is also getting transferred to the body in the form of kinetic energy. This what I have written, okay, this is the statement of how the work done is getting converted into energy. Work getting converted into energy with the help of a conservative force. Okay. ठीक है. और ऑब्वियसली अगर आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन करते हो, यू आर चेंजिंग इट्स एनर्जी लेवल, राइट. ये वैसे के क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर में जो स्प्रिंग वाला था? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है अपनी, हर स्प्रिंग का के अलग होता है. बेसिकली व्हाट इट टेल्स यू कि कितनी फोर्स लगाएं कि स्प्रिंग 1 मीटर लंबा हो जाए. तो हर स्प्रिंग की अपनी अपनी रिस्टोरिंग फोर्स होती है. अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो वापस वो खींचेगा आपको. तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो फोर्स जनरेट होती है स्प्रिंग के अंदर, वो होती है के एक्स. हुक्स लॉ. हुक्स लॉ. तो अगर आप बात करोगे के एक्स डी एक्स और इंटीग्रेट करोगे 0 to x, सो अगर आपने 0 to x इसको खींच दिया तो हाफ के एक्स स्क्वायर यही आता है. एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेट हो जाता है एक्स स्क्वायर बाय 2. दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज योर हुक्स लॉ. ठीक है. तो यू जस्ट नीड टू यूज योर कि work is being done and where is the work going, it's getting converted into energy. That is what happens. Okay, let me give an example. So you have this horizontal block. Okay, so let's say this is a question number 1. You have a horizontal block, and so the horizontal block, एक तो मैं ये लाइन बना लेता हूँ इसकी ऐसे, and this horizontal block is going like this, and then it is going like this, 1 2 and 3. Now all the surfaces, it can take 3 routes, 1 2 3. All the routes are frictionless. There is no, so you have to decide which route, and this is a finishing line. Okay, so he has to finish it, the block. That's your finish line. You have to rank the speed of the block at the finish line. तो आप अगर किस रूट पे जाओगे तो आपकी हाईएस्ट वेलोसिटी आपको मिलेगी. फ्रिक्शनलेस है, और दूसरा है ट्रैवल टाइम भी आपको रैंक करना है. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रैंक इज द स्पीड. द सेकंड thing you have to rank is the time. How will you do this? Socho, if you give it some, if it wants to go through 3 routes, 1 2 3, where will it be at the highest speed and why? At the finishing time. कई बार रास्ता आ जाता है, अंडरपास आ जाता है, कई बार स्ट्रेट आता है, कई बार फ्लाईओवर आ जाता है. फ्रिक्शनलेस है सारे के सारे. सो देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कुछ भी नहीं है. सो मान लो इसके पास 10 जूल्स था जब स्टार्ट करा इसने, राइट, एंड ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी
ग्राउंड, राइट? सो दिस इज ऑल हाफ एम वी स्क्वायर, ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है। नाउ जी। व्हेन इट स्टार्ट्स गोइंग अप, व्हाट हैपेंस? अ पार्ट ऑफ 10 जूल starts getting converted into potential energy. हम्म। If it starts going up like this, what happens? क्या होता है? एमजीएच। mgh मिल जाएगा, लेकिन लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ ना एनर्जी का, फ्रिक्शनलेस है। तो हो सकता है हाफ एम स्पीड कम हो स्क्वायर। जाए। ठीक है। स्पीड को कम होना पड़ेगा ना हाफ एम वी स्क्वायर को, अगर गेन इन पोटेंशियल चाहिए हाफ तो। एम स्क्वायर माइनस एमजीएच। व्हाट इज दैट? द सम विल रिमेन द सेम, वेलोसिटी विल गो डाउन, दैट्स ऑल। The at any position it is moving here or here, it has a velocity and it also has a height, ठीक। तो एमजीएच प्लस हाफ एम and स्क्वायर। it will remain 10 joules. ठीक। Only thing is now 10 joule is getting spent in two parts, ओके। right? So it is very likely agar if it reaches 1, it will be the slowest, because a lot of 10 joule will get spent in mgh1, right? Slowest ठीक हो है। जाएगा। If it continues to be the same, ये frictionless और यहीं सीधा निकल गया, no nothing is spent on potential energy, so जो भी velocity थी वही रहेगी, v से गया था तो v से ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाले में v1 is less than v2, ये तो पक्का है। और सॉरी, v2 is less than v1 सेकेंड रूट में, सॉरी ऊपर वाला रूट इज v1, राइट? सो आई वाज राइट, I will just rename them. This is v1 is less than v2 and this is your v2. Okay, so your second root, no change, v2 is v2, whatever is the initial velocity is this, कोई change नहीं हुआ, because this is frictionless, 10 जूल ही रहेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर विल रिमेन हाफ एम वी स्क्वायर। लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट, यहाँ क्या होगा? एक्सेलरेशन जी साइन थीटा वाली, राइट? वेलोसिटी विल गो अप, तो यहां जब वो पहुंचेगा तो हाईएस्ट वेलोसिटी पे आएगा, बट रिमेंबर इट्स पोटेंशियल विल बिकम नेगेटिव बिकॉज इट इज बिलो द जीरो लाइन। 10 जूल रहेगा, बट एट व्हाट कॉस्ट? इट विल एक्वायर अ पोटेंशियल विच इज माइनस एम जी एच, but the velocity is going to be very high in such a way that sum of these two still remains 10 joules. Any doubts in your mind? तीनों ही केस में सब जगह पे एनर्जी किसी भी पॉइंट पे 10 जूल्स है, तो सिर्फ वो अपीयर अलग अलग फॉर्मेट में हो रही है। 2 पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी रहेगी। मेरे ख्याल से तो इस पे रहेगी यार, 3 पे। एक मिनट। ये स्पीड यहाँ से नीचे जा, बढ़ेगी अच्छा बहुत, नीचे, अच्छा ये अंडर पास है 3। बहुत आपकी अच्छा। अचानक, लेकिन आपका पोटेंशियल लॉस हो जाएगा ना ये, बिकॉज यू आर एट नेगेटिव हाइट नाउ। ठीक है ठीक है। अच्छा। हो ओके। सकता है -4 पे 3 आ पे जाओ ज्यादा होगी फिर। और ये लेकिन 14 हो जाए, क्योंकि वी तो बढ़ गई ना इसकी। तो ठीक है, तो थर्ड पे सबसे ज्यादा होगी वेलोसिटी। यस, खर्चा करना है 10 जूल्स का, हाउ यू स्पेंड टू 10 जूल्स इज व्हाट यू नीड टू थिंक। टेल मी व्हाट हैपेंस टू द टाइम, व्हिच बॉडी विल टेक द मैक्सिमम टाइम? pretty common sense. फर्स्ट, द फर्स्ट Exactly. रूट। Yes. And third will take the least time, हाँ जी। assuming रूट्स की लेंथ बराबर है, थोड़ा सा कर्व आ गया है बट बराबर मान के चलो, ठीक है जी। ऑल राइट, so let me give you question number 2. Let's say you have a graph of potential energy, okay, and this is 8, this is, let me do one thing, just give me 1 second, I will just take a picture and copy it from Telegram so you can see the whole question yourself.
just page number 1 I've shared with you. It's a long question. I'll copy the full question on this, okay? Damn good question to understand the concept. Okay, so let's say we are comparing the मैंने पेस्ट कर दिया. कर रहा हूँ यार मैं. ये लो जी. So this is one copied. Rank पढ़ लो क्वेश्चन को. I will just copy the page number 2 also. So you have to do some kind of ranking again, and the ranking is very concept oriented question. Copied. हाँ जी, पढ़ लो क्या क्वेश्चन है. Then let's discuss the question and see if it makes sense. कुछ नहीं है, थिंकिंग करनी है, एनालिटिकल थिंकिंग है. और खर्चा तुम्हें मालूम है कि कैसे डिसाइड होता है. ग्राफ से कुछ रीड करना है. किसी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, एक्स एक्सिस में पोजीशन है, तो पोजीशन इज ए बी सी डी तो ई 0 से एफ. A के बीच में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है. 0 से A. ए के बीच में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी. ओके वेट, व्हाट इज द क्वेश्चन? रैंक द रीजन्स ए बी. रैंकिंग करनी है रीजन्स की ए बी बी सी सी डी अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. फोर्स पूछ रहा है, वो तो पूछ ही नहीं रहा जो बता रहे हो आप. आपको रीजन बताना है जहां पे फोर्स हाईएस्ट है. Now, how do you find the force if you're given a potential energy graph? That's my question. How will you find the force? मैंने लिखा था ये. If you are given a graph of u versus x, and I ask you, please tell me what is the force. How will you calculate the force? That's a question, right? क्या एक्सप्रेशन होता है उसका, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी को लिंक करने वाला? इंटीग्रेशन. यही था ना? Yes. we wrote change in potential energy delta ये u तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है. है एरिया अंडर द ग्राफ ना. एफ डी. दैट वो तो एफ और डी एक्स का होना चाहिए. फिर अगर एफ और एक्स का ग्राफ दे दूं, समथिंग लाइक दिस, दैट विल गिव यू द एनर्जी, राइट? एफ एक्स. लेकिन ये तो u वर्सेस x है, तो इंटीग्रेट नहीं करना. यू हैव टू फाइंड डी यू बाय डी एक्स विद अ माइनस साइन. तो देखो कहां पे स्लोप ऑफ डी यू वर्सेज डी एक्स इज हाइएस्ट. दैट प्लेस डेरिवेटिव लेना है u का. मतलब u जहां भी है उस रीजन में चेंज इन u निकालो. ए बी के अंदर कितना चेंज इन u आ रहा है? What is the change in u in the region AB? So in a potential energy curve, remember that Fx is written as minus du by dx.
So this is going to teach you how to read a potential energy graph. So potential energy की अपने आप में भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो AB में कितनी स्लोप आ रही है, चेंज इन U कितना है AB में, 8 से 3 पे आ गया. इट इज 3 minus 8 divided by how much, dx, राइट. dx कितना हो रहा है, ये मतलब काउंट करें. सबसे छोटा AB में है, राइट. हम्म, द शॉर्पेस्ट स्लोप is AB. हाँ. So I can clearly say that the force is going to be highest in the region AB because the slope is very steep, du by dx. माइनस du by dx है by the way. वो स्लोप दिख रही है, नेगेटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल है. So I will say that the magnitude of force is highest on the body when the body is in the region AB. तो ए बी में सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद ई एफ में, फिर उसके बाद सी डी, यार फिर बी GH सी. is also very good. अच्छा नहीं, EF का ए स्लोप बी अगर बी हम, सी सी डी और डी दे रखा है ना. अच्छा जो कंपेयर करने हैं, अच्छा हाँ. AB BC CD, अच्छा वी डोंट नीड टू डू GH करना ही नहीं है. हाँ जी. वी जस्ट नीड टू डू AB BC CD. फिर CD ग्रेटेस्ट में, वुड बी ए बी. हाँ, उसके बाद आ जाएगा D तो जीरो है, देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो स्लोप, सी डी. राइट. सी डी के बाद ई डी और बी सी. ठीक है, डी स्लोप और से बी. मालूम चलता है, स्लोप से, राइट. सो force, if you have to find from a potential energy versus this graph, will come from, okay, now let me just, before you get into the next part of it, let's first do a question so that your understanding of reading of a graph of a potential energy is strengthened. So let's first do this. How do you read a potential energy versus E graph? Okay, so sorry, X graph. So abhi dobara I'm making another graph. So let's do a analysis कि can we understand what's happening potential energy के graph को देख के क्या हम body के ऊपर क्या हो रहा है, can we just think about it. So let's say I draw another line and another line, and okay, so this is what is happening. This is the potential energy function and this is the position of the body, and this is given to be 4, this is given to be 1, बीच में 2 3 4 है, उसके बाद ये बीच में यहाँ पे you are given 5 and then this is ending at 6. Okay, so मतलब थोड़ा सा rough diagram है. So this is your body. So this is the mass of the body is 2 kilograms and it is in x-axis motion. Only force acting on it is a conservative force. ये दिया हुआ है, x-axis motion है, conservative force है, and the potential energy plot is also given to you. Now the body is placed between x is equal to 0 to x is equal to 7. जो positions of the body है वो 0 to 7 तक है. Okay, and these are the two positions and you are given a graph. और ये दे रखा है कि at x is equal to 6.5 meters, which is slightly ahead of so ये 7 है आपका. At x is equal to 6.5 meters, the particle has a velocity is given by -4 meter per second I, which means it is moving leftward maybe, है ना. And so this is the velocity at x is equal to, जब position थी 6.5, और ये जो ग्राफ है ux का, if I were to plot this, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है इन पोजिशंस पे 4 5 और 4 और 5 पे, राइट. सो ये 4 5 है, 5 यहाँ पे है, सॉरी, लेट मी जस्ट रीड्रॉ दिस. सो एट 5 द एनर्जी इट इज एग्जिबिटिंग is this 7 joules. So 4 to 5 में, if you notice the energy is 7 joule. Here it is 20 joule, which means the position from 0 to 1. ये meters में है ये. This is meter. This is obviously joule. So 20 joule और 6.5 पे
he is giving that at 6.5 the energy is 16 ux is given as 16 joules. Okay. If the particle is a plate, it would have the plotted value. Okay. From determine the speed of the particle at x is equal, आपको निकालना क्या है? ये 16 जूल दे रखा है ux की वैल्यू at 6.5. So if you are at 6.5, if you plot it, ये 20 है, ये 7 है, तो roughly here, right? You are at 16.16 joule when you are at 6.5. It's a conservative force scenario. So it is conservative force, and the position of the body is 6.5 meters, and the energy it shows is what you are supposed to, with this information available to you. Kinetic energy ke liye you need half mv square, so mass is given, and some important insight is given that at x is equal to 7.5, the potential energy is 16 joules, and the velocity which is noted is 4 meters. आपको पता लगाना है when the position was 4.5 meters, what is the velocity of the body? Using this graphical information, you have to realize this. And it's a case of conservative. ये बताया है. So whatever work you do will stay conserved in the form of energies. That expenditure has to remain constant, irrespective. वो चेंज नहीं हो सकता, वो आपस में सिर्फ इंटरचेंज हो सकता है. So which means that this energy, which is your kinetic energy plus the potential energy of the body, half mv square, and ux has to remain constant. ये चेंज नहीं होगी, आपस में इंटरचेंज हो रही है हर जगह पे बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ. So this is law of conservation of energy actually. This energy will remain conserved at every point. You just need to distribute it using the given information. What is happening in the graph? If you see graph को कैसे use कर सकते हो आप? You know the velocity at 4 meter at 6.5. So at 6.5, you also know the velocity. So half mv square is equal to half into 2 into velocity is minus 4 whole square is equal to 16 joules is your energy, which is the kinetic energy of the body. Okay, sorry. The 16 joule is the kinetic energy. Sorry, this is the kinetic energy. How, when it is on the ground, how can it have a potential energy? So ये calculation से हमें मालूम चला है. Not that ये 16 joule अभी जो दिखा है मैंने, ये actually ये kinetic energy है. But if you see, it is on the ground. It is here, right? यहाँ पे तो if you see the graph, the potential energy is 0. Right? यहाँ पे potential energy 6.5 पे, यहाँ पे see this is 6.5, u is 0. It has already touched u0 at 6. यहाँ पे टच हो गया, 0 हो गई 6 पे. उसके बाद वाली जगह पे even if it is moving with u equal to 0. So at 6.5 meters, kinetic energy is known, u is 0. So what is the total mechanical energy it has? 16 joules, right? Which is a sum of kinetic energy and potential energy. So this means at any place I have 16 joules for spending. एक जगह पता लग गया ना कि यहाँ पे क्या चल रहा है. Total mechanical energy, which is kinetic plus potential, is 16 joule. So wherever you see on the graph, it has to remain the same. Question is 4.5 मीटर पे क्या हो रहा है? 4.5 मीटर पे what is the potential energy if you see?
if this is 5, this is 4.5, हाँ जी। तो क्या कितनी एनर्जी आ रही है? 7 जूल, हाँ राइट? ओके, सो 7 जूल. टोटल एनर्जी कितनी है जो उसके पास अवेलेबल है? मैकेनिकल एनर्जी जो एक कन्वर्ट होती रहेगी एक दूसरे के अंदर, 16. You have total available this, right? हाँ So what will happen? So 16 is equal to ux plus kinetic energy. So 16 is equal to 7 plus kinetic energy. So kinetic energy at x is equal to 4.5 is equal to 9. So half mv square is equal to 9. So this is 2 kgs, ये कट जाएगा. So v square is equal to 9. V is equal to 3 meter per second. ठीक है। Now a twist for you. The twist is, please tell where is the body turning around. There is a point of turning, which means it turns its direction. From the graph, can you also find where is the point of turning? किस point पे वो body जो है घूम जाती है? Which means it stops and it turns back. It stops का मतलब क्या है? Kinetic energy zero हो गई ना? At the point of turning, what will happen? It has to momentarily stop and then turn. So kinetic energy at the point of turning is zero. And तो सारी की सारी एनर्जी कितनी हो गई इसकी फिर? 16 जूल जो है, अगर वो रुक गया तो सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल में. काइनेटिक में नहीं, काइनेटिक तो जीरो हो पोटेंशियल। गई. पोटेंशियल। पोटेंशियल में. पोटेंशियल एनर्जी 16 पे देखो, वेयर शुड इट बी लोकेटेड? ग्राफ पे देखो, 16 जूल पोटेंशियल, वेयर इज इट? विच एरिया इट रिजाइड्स इट एट 6? 20 से थोड़ा नीचे 16 बनाई रखा है हमने. पूरी की पूरी एनर्जी इस समय पोटेंशियल है. तो विच इज द पॉइंट ऑफ टर्निंग देन, जहां पे 16 जूल रहेगा थ्रू आउट? 0 से 6.5। 0 से 6.5. आई डोंट थिंक सो यार कि 16. क्यों यार, अगर आप 1 पे हो तो कितनी एनर्जी है आपकी पोटेंशियल? इफ यू आर एट 1, 20 जूल. 120। तो 0 to 6.5 कैसे हो गया? What's your turning point? At 6.5, what was your energy? At 6.5 meter, you had kinetic energy of 16 joule. यस। That is a total energy. Now that 16 तो दिख रहा है, but वो kinetic है actually, 16 ये वाला, right? This is kinetic. 16 जूल. ये कहाँ पे 16 जूल पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा? यहाँ पे टोटल एनर्जी 16 जूल, अग्रीड. ऑल ऑफ दिस इज काइनेटिक, but potential it is zero. So on this graph, if I were to label 16 joule, I will show it here. ओके। I will then draw a diagram here. Where does it cut the line here? हाँ जी। तो which means ये वाली जो जगह है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ग्राफ पे? 16. तो यहाँ लोकेशन क्या है उसकी? ओके। लोकेशन तो ऐसे ही निकालूंगा ना, मैं बोलूंगा ये है टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 16 है और नीचे देख लूंगा एक्स कितना है. ठीक है। और यू कैन से द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज 0. उसी से निकला ना, वेलोसिटी 0 का मतलब है कंप्लीटली पोटेंशियल हो गई. ग्राफ में गए, 16 जूल को ढूंढा, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, नीचे ड्रॉ करी, एक्स मिल गया. ओके. एक्चुअली फाइंड इट, निकाल सकते हो एक्चुअली क्या होगा ये स्लोप की हेल्प से, कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ अ लाइन से. y Because इक्वल्स टू mx प्लस c। हाँ वही, और क्या है, यही तो है. यू नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन,
And if you know the x y coordinate, you can find the x coordinate also. Point to मालूम है ये वाला. This is 1 comma 20, and how much is this? This is 4 comma 7. You know 2 points on the line. हाँ y2 yes. y1 x2 x1. स्लोप भी आ जाएगी, लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी. उस इक्वेशन के अंदर u y की सर वैल्यू वो यूज कर 16 ले डाल देना. डिस्टेंस फार्मूला स्लोप की हाँ, लेंथ निकालने निकाल के लो, लिए। निकाल लो. कैन समझ आ गया क्या करना है? हाँ Okay, so you're getting introduced to potential energy actually, if you see, and law of conservation of energy, right? So don't think you know this. You're just getting introduced gradually to the type of questioning. Okay, so ठीक U का concept पता होना चाहिए कि कैसे ग्राफ को पढ़ना होता है इसको. Anyway, वो कन्वर्जन तो एक क्वेश्चन में समझ में आ गई कि कैसे वो 16 जूल को खर्च करना है, बट ग्राफिकली कैसे पढ़ना है. बट माय क्वेश्चन नाउ इज, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, पार्ट 3. What is the force acting on this body between this region? Let me redraw this region. Okay, so this is 1.9. What is a force? You already know force is calculated using what? du by dx. तो you just need to find out वो 1.9 से लेके 4 मीटर का रीजन कौन सा है ग्राफ में. ये 1 था, ये 4 था, ठीक और आपने एक पॉइंट तो ढूंढ ही लिया है जो टर्निंग पॉइंट है. इफ यू कैलकुलेट द टर्निंग पॉइंट यूजिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन, द टर्निंग पॉइंट एक्चुअली कम्स आउट टू बी 1.9 when it turns, and the velocity is 0 here, okay, at the turning point. So 1.9 से 4 वाला जो पॉइंट है, ये वाला इधर पूछ रहा है वो. तो स्लोप तो ये दिख रही है ना आपको, ये वाली स्लोप. स्लोप तो पहले ही निकाल रखी है हमने, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन में निकाली होगी वो, और वैसे भी निकाल सकते हैं. 20 माइनस 7 इन पॉइंट से निकाल रहा हूं मैं. y2 माइनस y1 अपॉन 1 माइनस 4 कितना आ गया? 13 डिवाइडेड बाय -3. दैट इज योर फोर्स. 4.3 न्यूटन्स मैग्नीट्यूड. ओके What else can you decipher? और कुछ जो, okay, sorry, we have to put a negative sign also, right? It is minus du by dx. So it is minus, so this will become plus 4.3 newtons. Any inference can you draw from this? कंजर्वेटिव फोर्स लग रही थी. इसका मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको एक डायरेक्शन में लेके जा रही थी, उसके बाद उस कंजर्वेटिव फोर्स ने इसे रोक दिया और उल्टी डायरेक्शन में चलाना शुरू कर दिया, टर्निंग पॉइंट. तो इवन दो यू चेंज द डायरेक्शन, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन अ कंजर्वेटिव फोर्स. द एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. इस मोशन में ऐसा हुआ ना कि टर्निंग हुई है, लेकिन टर्निंग से एनर्जी के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ? कुछ भी नहीं. कहीं भी लो 16 जूल ही रहेगी. ठीक है Got it? Okay. Okay. So let's see if we can think through a similar type of question. And you can see the level of questioning. Turning point की definition क्या होती है? K should be 0. That's all. ए शुड बी 0 अच्छा Kinetic energy 0 थी ना, because it stops and हाँ turns back. यस ठीक Okay. ओके Okay. Now let me tell you the concept of equilibrium points. Okay. Potential energy के अंडर ही आएगा. और what are equilibrium points on a, so we are going to study equilibrium points, and the context of discussion in equilibrium points is ux versus x graph only. Okay, so if a body
Okay, equilibrium क्या energy के point of view से equilibrium. This is not that static equilibrium which we studied. So if you find that a body has no kinetic energy and no force or acting on it, it's a stationary body, then we say it is a body is in neutral equilibrium. Okay, so first type of equilibrium is neutral equilibrium. I will show you the context of U versus X graph. So neutral equilibrium के अंदर there is no external force on the body and there is no kinetic energy also. So no kinetic energy, no external force. It is a stationary body. कुछ नहीं हो रहा, neutral, just a neutral, right? So one equilibrium is this because it is not moving; it's in equilibrium. It's some anything kept on a ground is a neutral equilibrium. But let's say you have a situation of an unstable equilibrium, and there is also something called as a stable equilibrium. Any examples in your mind for stable equilibrium? जिससे मैंने स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था. If you disturb the spring towards right, the spring wants to come back, right? Because of the restoring force. F is सर equal to, हाँ जी, एक रबड़ बैंड, ठीक है, agreed. रबड़ मतलब जो Wants to come back, wants to come back. Stable equilibrium. मतलब आप उसको जरा भी अगर चीज को किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखते हो और उसको जरा सा टच छोड़ते हो, it wants to come back at the same point. For example, this is your hemispherical bowl, right? And what you do is you have a marble which is placed here. You touch it and leave it. It will come back. इधर इधर आके रुकना चाहता है वो, राइट? तो देखो ये ऊपर गया, टर्न हुआ, ऊपर गया, टर्न हुआ. स्टेबल इक्विलिब्रियम में यू कैन सी हाउ मेनी टर्निंग पॉइंट्स आर देयर. 2 turning points. Keeps on moving. If there is no loss of energy here, there is no friction, ये ऊपर जाएगा, it will like to go back to the initial position, cross and keep on oscillating between these 2 points. Okay, what about unstable equilibrium? इसका मतलब क्या होता है? यार अगर आप एक बॉडी है जो पड़ी इक्विलिब्रियम में है लेकिन उसको जरा सा भी आप अगर उसके ऊपर टच करोगे, राइट, the although it looks that it is in equilibrium, yet it wants to go back to the actual equilibrium position. तो मतलब पड़ा तो हुआ है. Say reverse this hemisphere and keep the ball here, marble here. The marble may be stationary here, right? You push it, will the marble like to come back? अभी तो No. ये equilibrium है ना यहाँ पे. हाँ जी. But if you push it slightly to right, will it like to come back as it was coming here? No. नीचे गिर जाएगा. हाँ, it not doesn't want, अभी तो equilibrium में है, पड़ा हुआ है. It is in, but if you touch it slightly, it goes down. It won't like to come back. If it likes to come back like a spring or this or rubber band, then it is a stable equilibrium. If it doesn't want to come back yet, तो it's very vulnerable. छूता ही मतलब वो तैयार बैठा हुआ है कि मैं जाऊं मजबूरी में, like it's sitting because of compulsions. Okay, because it has a balanced static force, net force, there is nothing. But the moment you touch it, it's so fragile, it goes off. Because the force is zero, and therefore it is in equilibrium. But it is not a stable type of equilibrium. Force तो यहाँ पे भी देखो equilibrium में बैठा हुआ है, force is zero. If you throw it up, it goes up, it wants to come back. It has a restoring force. Stable equilibriums have a restoring force. There are no turning points in this unstable equilibrium. There is nothing to turn. Right?
Okay. So let's see graphically what is happening on a UX graph. अगर हम UX graph को ध्यान से देखें तो UX graph के ऊपर क्या क्या नजर आता है. Okay. So any potential energy graph versus X graph, let's identify what's happening on the equilibrium front. How will you identify the equilibrium aspects? Okay, so let's say if I draw a diagram, which is this is your graph, okay? So may I make it like this and this and then this, okay? So this is your U versus X graph. So this is UX versus X graph. And these are some points, positions of the body, and some key points being marked x1, x2, vagera, vagera, right? So this is, for example, this is x2, this is x1. Another key point is x3, then x4, and then it stabilizes, it becomes flat. The potential energy is no longer changing after this point, okay, which is x5. It is not changing. So U versus X graph, and we will study this graph, okay? तो एक बात तो हमें पता चली चुकी है कि whenever we have to read a graph, the force is given by minus du by dx, which means the negative slope of the curve. So just find the negative slope, and if you find, for example, this particular, here the slope in this particular region is, if you notice this region, right, which is this, the slope is positive, okay, yeah. So what it represents is a strong force, and if you go uh, parallel, for example, here, you know, some sort of parallel, जहाँ पे कहीं straight आ रहा है, जैसे ये point है या ये वाली जगह है, and there is hardly any slope which is existing. So वो ये हम कर चुके हैं already. How to read the force? Steepest possible will tell you the highest force available during the motion. Okay, and if you have to find the total mechanical energy of the body, how will you do that? If you have to find the E mechanical of the body, Area under the graph. huh? Area under the graph. नो नो नो, मैकेनिकल एनर्जी कैसे आएगी उससे? इससे एरिया अंडर द ग्राफ से कुछ नहीं आता. यू एक्स इंटू एक्स इज जूल इंटू मीटर. जूल इंटू मीटर इज नथिंग. यू शुड हैव न्यूटन इंटू मीटर टू गेट अ जूल. तो नथिंग, इट गिव्स यू नथिंग. And this graph, by the way, is telling you that the additionally, because conservative force is involved, the kinetic energy, as the potential energy is changing, the kinetic energy also undergoes a change to keep the sum of ke and pe to be constant. ये हमेशा constant रहते हैं ग्राफ के अंदर. Okay, so let's say your total energy which was available to you was some value of, let's say, some value. Okay, this is the value, ये दे रखी है. The total energy available is 5 joules. So just tell me, if I were to calculate the kinetic energy, how will I do at any point? By subtracting the two. If I want to find kinetic energy here, how should I do? I know my potential energy here, right? At this point, I know what is a total energy, because this is total energy. It always remains conserved everywhere. So the difference of these two will give me the kinetic energy at that point. यहाँ potential energy इतनी है, तो ये total energy है body की. तो बाकी जो balance energy आ रही है, and this is a straight line of mechanical energy, which is sum of PE plus KE. Does not change at all. So this is your KE at some other point. You can see the potential energy has gone down from here to here. So kinetic energy has compensated. It has gone up. Tell me a point in this graph where the kinetic energy is highest.
पढ़ के, knowing the mechanical energy is conserved. Can you tell me a point on this graph where your kinetic energy is highest? Sum And has to remain same. Which point of the 5 points marked represents the highest kinetic energy? X1. How? Oh, x1 पे पोटेंशियल एनर्जी तो है कुछ. x1 पे एक्चुअली अगर मैं ध्यान से देखूं, इफ दिस इज माई x1 फॉर एग्जांपल, राइट, अगर मैं x1 पे देखूं तो मेरी सारी की सारी एनर्जी वो है पोटेंशियल, ठीक है नहीं, सारी की सारी है. complete 5 joules is this is 5 joules. So x1 actually represents total potential energy. So you here the kinetic energy is 0. I am saying where is my kinetic energy highest? यहां तो सारा खर्चा पोटेंशियल एनर्जी में हो गया. थिंक. हाँ जी. The total has to remain 5. Where the kinetic energy is the least. ये है ना पॉइंट. जहां पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट हो गई, खत्म ही हो गई ना पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे x2 पे 0 पे नहीं आ गई. 5 joule of potential energy was here. It has got converted into 0 joule here. तो बाकी क्या बचा उसके पास? 5 joule कहाँ गया? Any yes, no, understood, not understood? Haji Shitesh, are you sleeping or are you still? नहीं नहीं. My question is, 5 joule is available to it as a total. Is What is happening at x2? What is a u? U कितना है x2 पे? 0. तो गई का एनर्जी बाकी सारी फिर उड़ गई. 5 joules काइनेटिक अच्छा, एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. काइनेटिक एनर्जी बन गई. सम हैज टू रिमेन कांस्टेंट यार. क्या बोल अच्छा, रहे के में, अच्छा के में 0 हो जाएगी काइनेटिक हो? एनर्जी. यस. पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी. यस. Okay. ओके. So at x2 the body is at the highest speed, right? हाँ जी. ठीक है. Understood. What else can we read from the graph? We have read the kinetic energy is calculated by total minus that, and okay, so we know the total energy in joules. We know the kinetic energy is greatest. Particle is moving fastest at x2. ठीक है. Okay. ओके, हमने टर्निंग पॉइंट कहां पे है हमारा? वेयर इज अ टर्निंग पॉइंट इन दिस? यू एक्चुअली फाउंड इट. वो क्या कहते हैं X1. यस, दैट्स अ टर्निंग पॉइंट.
सही है, दैट्स अ टर्निंग पॉइंट। हाँ, टर्निंग पॉइंट भी ढूंढना होता है हमको। ओके, ओके, ओके। सो ये भी एक हमने देख लिया। और ओके, सो लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन एक्चुअली इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट था फ्रॉम द ग्राफ, उसके भी यू हैव ओके। सो लेट्स से इस इसके ऊपर यू स्टडी व्हेन द एनर्जी इज 1 जूल। इस ग्राफ में सी द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज 1 जूल। सो लेट मी जस्ट मार्क 1 जूल फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टडी की व्हाट इज हैपनिंग एट 1 जूल। लेट मी जस्ट स्टॉप सीइंग, ठीक से नजर नहीं आ रहा मुझे टू मच। Just give me 1 second. Let me mark some points and let's discuss equilibrium from this graph. So this graph is now, so this is 6, 5, and let us say this is your, this point is straight line अगर मैं बनाता हूँ तो बन ही नहीं रही. Let me see if I can use some tools to draw this. Yes. So if I draw a line, yes, बन गई. So this is 1 joule. Okay, this is 1 joule, and there is another point which is the highest point, which is this. Let me draw one more line here. So this is another line, and let's say this is 3 joules. So this is 3 joules. So two lines, 1, 2, and third line is this, ye wali. So third line is 4 joule. This is your 4 joule. This is 4 joules. Okay, so this is 3 joule, 1 joule. So the ये वाले जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्लोप जीरो हो रही है, 1, 2 और 1, 2 और तीसरा ये यहाँ पे, दिस इज x5. सो वी आर डिस्कसिंग, ग्राफ सही नहीं बना हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, ये 3 पॉइंट है. नाउ डिस्कस द सिचुएशन व्हेन योर बॉडी इज, व्हेन द एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 1 जूल. ये 1 जूल दिख रहा, पोटेंशियल एनर्जी. ओके, विच मीन्स इट इज समवेयर हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर. व्हाट इज हैपनिंग यू थिंक? x2 के अराउंड क्या हो रहा है? x2 के अराउंड जहां पे 1 जूल है, या इधर से लेके इधर हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? ये can you think what is happening? I told you what is stable equilibrium, so therefore I'm saying just focus on x2 point and see what is happening to potential energy. Okay, yeah, this is identical to that bowl, right, which we were studying. फर्क इतना है कि ये पोटेंशियल एनर्जी का वेल है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी वेल. डिप्रेशन ही कहोगे इसको आप? है
डिप्रेशन। नहीं नहीं, इट्स नॉट डिप्रेशन यार, व्हाट डू यू मीन डिप्रेशन? Well, this is geography term, right? It is geographic. हाँ। Okay, can say that. Valley भी बोल सकते हो, ट्रफ भी बोल सकते हो, फिजिक्स में तो इसको you will call it. So ये जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स के ग्राफ में ऐसी जो ये शेप आती है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, विच मीन्स द बॉडी विल गेट ट्रैप्ड इन दिस रीजन एंड इट विल नॉट बी एबल टू क्रॉस, मतलब ये इस पॉइंट अराउंड एक्स टू इट विल ऑसिलेट. इसकी पोटेंशियल एनर्जी एक तो लीस्ट है यहाँ पे, potential energy is very least, and the moment you calculate force on it, there it is in equilibrium also because force is also zero. The potential energy is least. बॉल के अंदर अगर आपने ये रखा तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज लीस्ट, लोएस्ट हाइट नहीं है कुछ भी, यहाँ पे है, और द फोर्स इज ऑल्सो जीरो. यहाँ स्लोप भी जीरो है, फोर्स भी जीरो है. तो ये दिस पॉइंट एक्चुअली इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम because here the du by dx actually comes out to be zero. But consider this point, ये वाला point लो अगर. What is happening here? Here also du by dx is zero. It is parallel, right? Now the debate is whether this is stable equilibrium or not at x3. Is it a potential energy well? कुआं, potential energy का कुआं है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी डिप्रेशन। भाई वो तो इसकी शेप तो ये होती है ना, ये हाँ तो ये वही अभी तो हमने है, देखी डिप्रेशन ही तो है ये। है, लेकिन ये ऐसे वाला है ना, रिवर्स्ड. अच्छा। हाउ डू यू से दैट ये वैसे वाला ही है? मतलब थिंक थ्रू दिस. इज द फोर्स जीरो? इट इज बिकॉज इट इज पैरेलल टू यस। एक्स एक्सिस. डी यू बाई डी एक्स तो आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको लेफ्ट या राइटवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्हाट इज हैपनिंग? अगर ये लेफ्ट और राइट जाए तो इस पॉइंट से, does it have an opportunity to go to a lower potential energy on the right? What is happening at x3, by the way? How much is the kinetic energy at x3? एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी 2 इज joules. 2, क्योंकि 3 जूल है ना पोटेंशियल, वो बनाई थी मैंने लाइन. सो काइनेटिक एनर्जी इज 2, द पोटेंशियल एनर्जी इज 3. ठीक है. What is the direction of force on it if you see right side of this point? इस पॉइंट पे x3 पे अगर स्लोप ड्रॉ करें ये वाली और ये वाली, तो क्या डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या है? कैन यू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द स्लोप? स्लाइटली इससे थोड़ा सा पीछे, समथिंग लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, राइट? मतलब थोड़ा सा उसके पीछे, 1 माइनस एच एंड 1 प्लस एच. वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम अ यू एक्स ग्राफ? यू आर डिसाइडिंग द डायरेक्शन. इज इट पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इज इट, कहने का मतलब है, मान लो ये यहाँ पे है और फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है कि आपने इसे थोड़ा राइटवर्ड धक्का दिया, आपने बॉल को थोड़ा सा धक्का दिया, तो क्या वो उसके साथ ही चला गया या रिस्टोर करने की कोशिश करी? साथ में इफ इट चला गो, गया ना। साथ ही चला जाएगा, हाँ। राइट? सो दिस पॉइंट इज व्हाट? पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. यस। रिवर्स ही है वैसे भी वेल का. ठीक।
शेप में भी बाई चांस उल्टा बन रहा है। ओके। जैसे होता नहीं, कनकेव एंड कन्वेक्स, कनकेव एंड कन्वेक्स पढ़ते है। नहीं है? कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी, लेंस नहीं होते? हाँ, लेंस तो पता है। वैसे नहीं पता होगा ग्राफिकली कनकेव क्या होता है। ओके। कनकेव लेंस, हाँ। हाँ पता होगा, बीच हाँ, में वो तो ऐसे पता होता है। है। ओके। कनकेव नहीं। हाँ, ऐसे राइट। ना। हाँ। और एक वो होता है कन्वेक्स, जैसे राइट। होता है डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। यस। Okay, tell me a position on this graph where you think it's a neutral equilibrium. The body does not have any kinetic energy in a neutral equilibrium. पढ़ा होता है, and force is also zero. The body does not have a kinetic energy and the force is also zero. Kinetic energy zero you found at a ये place. वाला X5। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो है क्योंकि 1 जूल तो होगी। x5 पे if you say the total energy is 5 joules, then kinetic तो ये 4 जूल आ रही है ना यहाँ पे तो potential energy. The kinetic energy has to be zero at that point and the force also needs to be zero. I think थोड़ा ग्राफ हमारा जो है उसकी वजह से नजर नहीं आ रहा, नहीं तो बहुत ही इजी था। You found it right? Kinetic energy zero कहाँ पे है? हम्म। x1 पे ही था ना, हाँ। जहाँ पे सारी की सारी एनर्जी उसमें कन्वर्टेड है। Probably the graph is not showing that क्योंकि और तो वो पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे काइनेटिक टर्निंग, और कहाँ पे हो रही है? देर इज नो अदर वैल्यू वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज टचिंग 5 जूल्स टोटल, इट इज नॉट। बाकी सब जगह पे काइनेटिक भी है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सो मे बी दिस ग्राफ ये जो बनाया है इट शुड हैव बीन बिट बेटर यहाँ पे। सॉरी, तो पूरा ही चला गया, एक सेकंड, कंट्रोल। हाउ कैन आई गेट इट बैक यार? क्या सर? ग्राफ कट गया। अच्छा, ये कट गया पूरा, रुक जाओ। हाँ पूरा कट गया ग्राफ ही। आपके पास कंट्रोल जेड दबाओ। वही कर रहा हूँ यार, एक तो मिनट, वहां पर एक कंट्रोल। अंडू रीडो का बटन होगा जहाँ पे से ऐसे जूम करते हो। एक मिनट। बिल्कुल साइड में, हाँ दिख रहा है। आ लेफ्ट हैंड साइड गया, पर। ओके, ओह शुक्र है आ गया। ओके लेट मी डू वन मोर। लाइन भी बन गई। Okay, दोनों चले गए थे। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग। टर्निंग पॉइंट मालूम चल गया, फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स। डोंट वरी अबाउट डेरिवेशन ऑफ दिस डी यू बाई डी एक्स, ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डी यू बाई डी एक्स का डेरिवेशन के। टर्निंग पॉइंट पता चल गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्चुअली पता चल गया कि क्या हो सकता था। और अभी तक हमने जितने भी दिमाग लगाया है उसके अंदर वी आर सेइंग इट्स अ conservative force. There is nothing called as friction in our question so far. कुछ भी नहीं है। Okay, okay. So let me draw a diagram. Very interesting question again, and gives you good opportunity to first think. Okay, so let's say you have a situation of a this is the okay. I'm going to the next page, okay, so that it's easy for us to add. Okay, so let's go to the next page. So now you have uh, so this is given to be 5 meters height. फॉर रेफरेंस यहाँ से नापनी है हमको। हमारा एक ब्लॉक कहीं पड़ा हुआ था और वो हिल या किसी रोड पे ऐसे नीचे की तरफ गिरता है, फिर ऐसे जाता है
ये रूट है उसके लिए, अब जाएगा नहीं जाएगा वी हैव टू डिसाइड। ओके, सो फिर ये ऐसे जाता है और फिर ये फ्रिक्शन नहीं है बिल्कुल भी, सो नो लॉस ऑफ एनर्जी थ्रू आउट दिस, ओनली इंटरचेंज बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और ये और ऊपर चला गया। ओके, and it stops here. So regions which you are interested is 1, 2, 3, and 4, and this is 0.5 meters. This is 1.5 meters, and this is 2.5 meter, and this is 3.5 meter. Okay, these are your regions, and the question is, this is a stationary block and it is released. This is a block and now it is released from rest from a height of say जहां से छोड़ा था, ये तो पूरा दिख रहा है हमें। ओके, सो दिस इज 3 meters, आई एम सॉरी, इट इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3 meters, and these regions which you see drawn as 1, 2, 3 actually are circular. Remember, they are circular, although they don't look like circular, but assume they are circular in nature. Okay, so these are basically circular loops or tops, each one of them, ये सब circular है, ठीक है। और हाइट इनकी दे रखी है टॉप पॉइंट की 2.5, 1.5, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, and it is also given that the block does not fly off the top, which means इस पॉइंट पे पहुंच के it does not fly off like a projectile. It does not. It stays connected to the road because there is some centripetal force available which keeps it in the. Oh, yaar. Let me go back. Just give me 1 second. All right. So it stays in this particular circle. It does not fly off. That is another condition. Question number 1 is, which is the first hill which this block will not be able to cross? Able to cross. Not able to cross. Fourth point. ठीक है? You don't have enough energy. Kinetic energy 0. मतलब यहीं पे आके रुक जाएगा ना 3 पे ही. It will stop at 3, right? Sorry, yeah. It will stop here. So half meter नीचे रुक जाएगा. So okay, so maybe थोड़ा सा और ऊंचा बना देते हैं. So this is 3.5. So half meter पहले ही it will stop here. Exactly, the complete energy will convert to potential. Okay. Second part of the question. What does a block do after it falls off? After falling to cross the hill, क्या करता है ब्लॉक? क्या करता है? जैसे ये it crosses the hill, right? It comes here. It comes तो here. पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है क्योंकि पहला क्या हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हो जाती, नहीं, मतलब हाइट तो है ना. स्टेबल इक्विलिब्रियम. The moment it crosses here, it goes down like this. So what does it do? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. Okay. किस किस हिल टॉप पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगी? किस पे हाईएस्ट है? मतलब होगी तो सभी पे. Where is the centripetal force highest? First. Where is the centripetal force highest? Why? फर्स्ट वाले पे होनी चाहिए. Yes, because the potential energy is the least and the kinetic energy is the highest, velocity is highest, and therefore mv square bar is the highest. v स्क्वायर तो फ्रीक्वेंसी होती है ना कि वेलोसिटी. Velocity. ना फ्रीक्वेंसी नहीं होती. v is equal to omega r is equal to 2 pi by t. r is equal to 2 pi frequency into r. सर v है. अच्छा. Velocity, uniform circle में velocity, ठीक है. which remains always same.
So the centripetal force is going to be highest here. ठीक. Where Okay. is the normal reaction least? Fourth. Why? Because highest point पे kinetic energy 0 हो जाती है. ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्यों जीरो हो जाएगा? Normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन मतलब दो सरफेसेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन है, राइट? दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन. वेयर विल द नॉर्मल रिएक्शन बी लीस्ट नॉर्मल रिएक्शन? देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवे. हाउ विल यू थिंक अबाउट नॉर्मल रिएक्शन नाउ? Assume you are at the top point, right here. You are pressing the hills with what? mv square by r, right? That is your pressing, right? And the weight? You are pressing with what? One is the weight, and you are getting back a normal reaction. The weight is centripetal force का source क्या है यहाँ पे? So there is this circular motion. You are here at the top of vertical circle है, हमने पढ़ा नहीं हुआ. But think, if you are pressing it with your weight, you are getting back your normal reaction. The net centripetal force is mg minus n is equal to mv square by r. So normal reaction is mg minus mv square by r. Wherever the centripetal force is highest, normal reaction is the least. So centripetal force was highest here, and therefore the normal reaction is the least. ये वर्टिकल सर्कल है, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल नहीं है. यहाँ पे द बॉडी इज ऑन अ वर्टिकल सर्कल मूविंग ऑन सम रोड विच इज वर्टिकल, नॉट हॉरिजॉन्टल. जमीन वाला नहीं है ये. इट इज नॉट ऑन द ग्राउंड, इट इज लाइक दिस वर्टिकल. साइडवेज में देखने में इट इज like this. So the car comes here, goes like this, and then when it reaches the top, it presses it down, it gets a normal reaction. The resultant of the two, mg minus n, is the source of centripetal force. Wherever the centripetal force is highest, the normal reaction mg minus mv square by r. Highest centripetal force subtraction from the same weight, तो सब जगह same है, will fetch you the least normal reaction. So here the centripetal force is the highest, and therefore the normal reaction is the least. Again with this. ठीक. मिक्स कर दिया ना सर्कुलर मोशन, और पढ़ा नहीं हमने वर्टिकल सर्कल. Okay. ठीक है. So we will continue to do this discussion on this topic. I think more or less हमने potential energy समझ लिया है, और we've understood kinetic energy. What we will do, we will start practicing now the questions pertaining to work power energy. अब थोड़ी 8-10-20 क्वेश्चन कर लेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में, so that we have clarity on how to handle numerical aspects. Right? Theoretically, this is what it is. And then we will move to the next topic, which is when we will introduce friction also in the questions, and say what happens when friction is also involved. वाला टॉपिक collisions या कुछ और? हाँ, फिर पढ़ेंगे पावर, पढ़ेंगे फिर लास्ट में विल स्टडी collisions. ठीक है जी. तो वी नीड लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस. हाँ, हो जाएगा. आई थिंक दिस विल फिनिश बाय व्हाट डे इज इट टुडे? 24th. बाय सैटरडे इट विल फिनिश. Saturday or maximum to maximum Monday. 3 more classes will be required. We'll have to do some reasoning, assertion, short answers, MCQs, numericals. करते करते टाइम लग जाएगा थोड़ा. कोलिजन की डेरिवेशन है आएगी. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. टेक 3 more classes minimum. 3 में हो जाएगा. ठीक है जी. मिस्टर शतेश, आर यू यस देयर? सर, मतलब मंडे तक निपट जाएगा चैप्टर. हाँ, मंडे इवनिंग तक निपट जाएगा. यस, इट विल. ठीक है जी. सी यू देन. सैटरडे को भी कोशिश कर सकते हैं, 2 क्लास से रख लो तो. यार, आई हैव सम वर्क टू डू, अदरवाइज आई वुड हैव केप्ट. अगर हो सकेगा नहीं जाऊंगा मैं तो कर लूंगा, या एक ही क्लास में लंबी कर लेंगे और खत्म कर लेंगे. नथिंग टू वरी. Eating more does not mean you will absorb more.
does you will not. You will absorb as much as possible on a daily basis. Rest gets stored somewhere else or gets out. ठीक है जी.